আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানের নাম রাখা সম্পূর্ণ বলা যায় আগামী একটা বছর আমরা সমাজে সমাজটা উন্নতি করবো এবং আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে প্রথমে আমি স্টেজে ডেকে নিচ্ছি আশিস আইনমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট রোটারিয়ান উত্তর বঙ্গবন্ধু মঞ্চে আমার পরিচিত এবং আমাদের ডিস্ট্রিক্টের সবার পরিচিত এবং সবার কাছের 2008 ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর রোটারিয়ান সমিতি আমি জাতীয় আর্থিক ক্লাবের সেক্রেটারি ছিলাম ওনার পেটে সিলচর হয়েছিল আমি গিয়েছিলাম সেখানে আদাটা বেশি ভুলে গেল এবার মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি আমাদের ডিস্ট্রিক্টের এবারে পিডিজি মাননীয় রোটারিয়ান সভাপতি স্বপন কুমার চৌধুরী আমার মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি পাঁচ কেজি রোটারিয়ান পার্থ মঞ্চে আপনাদের অনুরোধ করছি এই বছরের অ্যাসিস্ট্যান্ট গভর্নর রোটারিয়ান বিভাগ বিশেষ মহাশয় আহ্বান করছি আমাদের এই বোর্ডে সবচেয়ে হোশিয়ার রোটারিয়ান আমাদের বোর্ডে আমার কাকু হয় অনেকের কাকু অনেকের দাদা সত্যতা বলতে যার অনুপ্রেরণায় এই বয়সেও যদি আমাদেরকে প্রত্যেকটা মিটিংয়ে থেকে আমাদের যে উৎসব হয় আগামী কাজের জন্য এই রোটারিয়ান পালন হবে Ready? সামনে
ন্যাশনাল অ্যানথেমটা চালাচ্ছিল, ন্যাশনাল অ্যানথেম চালু হচ্ছে। হ্যাঁ এখন বলো তারা শুরু হবে, বলে তো বলো। চালু করার জন্য রেডি হয়েছে। আচ্ছা আজলদা সবাইকে প্রস্তুত করে বলো, একদিন চলবে সবাইকে বলে দাও ভোট করে দিতে। হ্যালো মাইকে বললে অসুবিধা হবে। ন্যাশনাল অ্যানথেমটা আমি চালু করব। আমাদের এখন জাতীয় সঙ্গীত হবে, সবাই একটু দাঁড়াবো। সাউন্ড আসছে না, ওটা কোনো সাউন্ড আসছে না। এবার আমরা জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে
আমাদের 'Yes'. Am I audible? Hello? Am I audible? আমাকে শোনা যাচ্ছে? হ্যালো? 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 হ্যাঁ। বিভাস? আঙ্কেল আপনার কথা শোনা যাচ্ছে। যাচ্ছে না, আমি বুঝতে পারছি না অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, না ঠিক আছে। ঠিক আছে না? না কি আমারে অ্যাড্রেস করতে বলছে নাকি? আমারে কিছু কোয়া হয়েছিল, তুমি বলো না। হ্যালো? হ্যালো। আমারে কি বলছিল বলো তো, আমি কোনো শুনি না আসল কথা। আগে একটু হোস্ট আছিল, ওটা মিউট আসলাম।
ঢুকছি না। আমরা একটু বলতে পারবা কি আমাকে কি এখন কি আই শুড অ্যাড্রেস দ্য গ্যাদারিং অর হোয়াট? ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। ওকে, रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3240 तरफ से आप सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन देते हूँ। আমি আপনার সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি রোটারি নববর্ষ 21 আর 22 জন্য। আমি বাংলা খুব একটা ভালো করে বলতে পারবো না, that I may be excused, or Hindi also I'm not that fluent on Hindi. I'll try my level best to speak in either English or Hindi or Bangla. Any of these three languages I'll try my level best. Because my mother tongue is Assamese, there will be some Assamese accent in Bangla or in Hindi also, it may be there. Please excuse me for that. Anyway, আমি অত্যন্ত সুখী হয়েছি যে এখানে আপনাদের মধ্যে সমর্পণে আসতে। আপনারা সবাই ফোন করেছেন যে না ইউ আর সমর্পিত টু দিস অর্গানাইজেশন। আজকে আপনাদের মধ্যে অ্যারাউন্ড 10 জন প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট ইনস্টলেশন যেটা সিরিমনি এটা হয়েছে, প্রত্যেকজনকে আপনাকে আমি আমাদের নব রোটারি বর্ষের জন্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। आपको हम अभिनंदन देते हैं। हम लोग एक साथ काम करते हैं, अगले साल कुछ कर दिखाते हैं। हम लोग का अंदर में एक जुनून होना चाहिए टू डू समथिंग। कुछ करने का जुनून नहीं होने से कुछ करने नहीं सकते। अब हम लोग का एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो एक तो जुगात्मक बोलते हैं ना, जुगात्मक एक हमारे चिंताधारा থাকতে লাগবো যাতে we can do something in my Rotary. এখন আমি দেখছি যে লাস্ট 1-2 ইয়ার্স, গত বছর 2 বছরের জন্য আমরা একটু সাবডিউড হয়েছিলাম বিকজ অফ দি কোভিড প্যান্ডেমিক। কোভিড প্যান্ডেমিকটা আসলো আমাদেরকে একদম সবাইকে সেতার করে দিল, সবাইরে আমাকে এফেক্ট হয়ে গেছিল। উই আর অল বিং সেটার্ড বাই দ্য কোভিড প্যান্ডেমিক। আমাদের সবাইকে কি করে আমি বাঁচতে চাই, দ্যাট হ্যাজ টু বি ডান। আমরা যখন ভ্যাকসিনটা পুরো সবাই নিতে পারি উইদিন কাপল অফ মান্থস, 2-3 মাসের মধ্যে সবাই যাতে সব মানুষে একটা ভ্যাকসিনটা নিয়ে যায়, ওইটা আমরা বাঁচি যাব। 1 নম্বর। 2 নম্বর 3 নম্বর ডেল্টা ওয়েভ একটা আইতেছে, ডেল্টা ভাইরাসের একটা ভেরিয়েন্ট আইতেছে, ওইটা একটু সিভিয়ার হবে। দ্যাট উইল বি এফেক্টিং দ্য মোর অফ দ্য ইয়ঙ্গার চিলড্রেন। আমাদের বাচ্চাদের 18 বছরের নিচে, 2 বছর থেকে 18 বছরের মধ্যে এখনো আমাদের যেটা প্রতিষেধক বিজি পাওয়া যায় ওটা এখনো আসছে না। না আসার জন্য আমরা এখন কি করব? হাউ টু কিপ দেম অ্যালোভ। 3টা ওই 4টা যেটা কোভিড প্রোটোকল আমরা বলি, the one we has to do, আমাদের একটু मास्क पहनना था, हाथ जेटा मास्क पहनने का बात है ना, जो हाथ धोने का बात है ना, बार-बार हाथ धोने का, ये अगर करने से हम लोग का वायरल डिजीज कोई भी होने नहीं सकता। हम लोग को सबसे दूरी जो सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं ना, सबसे दूरी बजा के रखना चाहिए। एक आदमी अगर खांसी होता है तो सीख मारता है, अराउंड 2 मीटर अंदर में उसका सीख गिरता है, वो अंदर चला जाएगा ना, तब तो हम लोग वैक्सीन बीमारी तो पकड़ लेता है। वो जब बीमारी से हमको बचना है तो अब यू हैव टू टेक केयर, हाउ टू टेक कोविड प्रोटोकॉल लेना ही है। फ्रेंड्स, ये जाना है, एक तो इसमें है वाबी साबी बोल के एक तो जापानीज का एक तो मिला रहा हमको थोड़ा दिन पहले। इसमें मिला रहा कि वाबी साबी मीन्स आपको ये भी everything has changed, nothing is permanent। कोई भी चीज हर दिन नहीं रहता, बदल होते रहता है। ये जो बदलाव आता है हम लोग का जिंदगी में आया है, हम लोग का समाज में आया है, हम लोग का क्लब में आया है। हम लोग अभी हम तो अभी देखो 20
around 35, no, around Sully is 40 years. हम लोग ये बच्चा देखते 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 बूढ़ा होने वाला है. हम लोग को अभी आगे तो ये कंप्यूटर चलाने. I welcome our IPDG Devas here. I have seen his photo here. He must join. Welcome. You have done a wonderful century on district governor. Welcome here. हमरा क्या होगा ना, ये जो सेंचुरी हम लोग का बदलाव आता है ना, these two सेल हम बोलते हैं, ये जो बदलाव जो होता है कोविड वैक्सीन के लिए वो चला जाएगा, अभी नहीं रहेगा. हम लोग बदलाव के साथ अपने को बदलना है. हम लोग को एक तो पॉजिटिव योगात्मक जो सोचने का विचार जुनून एक तो रखना है, कुछ कर दिखाने का. अगर हम लोग कुछ करने दिखाने के लिए सोचते हैं अंदर से, तो क्या होगा, हम लोग सब में आगे सकते हैं. हर चीज में हम लोग आगे चला जाएंगे. हमको खाली कर दिखाने का बात है. हम लोग जो अभी चेंज आया है, इसके लिए हम लोग क्या करना है, हमको प्रिकॉशन तो लेना ही है. उसके बाद हम लोग अपने को ढालना है नया तरीके में. हम लोग जैसे बूढ़ा आदमी से अभी जो जूम मीटिंग ये सब सीख लिया. अजी ये हम लोग तो कभी जानता ही नहीं रहा. I never talked about these things ever. I was like, really, I do not know how to enter these words when they're sitting. That's what I didn't know. मेरे को ये सब नहीं मालूम रहा. एक्चुअली हम लोग क्या होता है, देखता है दिन भर, पेशेंट देखता है, बच्चा देखता है, वो सब के लिए हम लोग दिन भर चला जाते हैं. बाकी जो टाइम मिलता है गपशप करते हैं. अपना रोटरी फ्रेंड के रोटरी वहां में जाके थोड़ा सा एक दो पैक ले भी लेता है, फ्रूटी भी करता है, डांस भी मारता है, वो सब भी करता है. That's a fellowship you don't get anywhere else. हम लोग अभी हर प्रोफेशन, हर वोकेशन से आया है. एक कहीं डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई विभास है, कोई ही इज फ्रॉम ए बिजनेस. हम अभी सोचो, हम लोग अगर सोचते हैं, हम लोग को अगर रोटरी नहीं होता तो ये कहाँ से हमको ये मिलता रहा. अभी संचिता अंदर में है, हम देखा है संचिता इज देयर इन ये जूम ऑल्सो. देखते अदरवाइज हाउ कुड हैव वी मेड. हम लोग कभी भी सोचते हैं, अभी कभी कोई प्रोबेबली फ्रॉम बाहर से जो आएगा, गेरी हुआंग आपका यहाँ में, अब हम सोचते हैं कभी भी मिल सकते हैं. ये रोटरी का चेंज बदलाव लाया है हम लोग को लाने, ये एक कथा करने के लिए, एकता बनाने के लिए. Hindi mein I am not that proficient. Still I am trying. Still, let us friends, let us try to have a positive attitude. Let us grow with the times, what they say, and probably these will not last. मेरा अभी जो एज ए प्रोफेशनल इन द पेडियाट्रिक्स हम बोलते हैं 2 साल से 18 से थर्ड वेव जो आने वाला है, it is expected to be here by around November and December. उसके लिए हम लोग को डरना पड़ेगा. We have to be prepared for that. हम लोग को अभी से बच्चा लोग को ये जो फ्लू वाला एक तो वैक्सीन आया है, कैन वी नो एक्चुअली इन्फ्लुएंजा के एक तो वैक्सीन आया है. हम तो बोलते सब बच्चा को दिलाना चाहिए. ये गवर्नमेंट लेवल में आया नहीं, लेकिन दे देने से 1 साल में एक तो हम लोग बच्चे लोग को बचा के रखते हैं. फ्लू अगर नहीं होगा, सर्दी खांसी नहीं होगा, हमको टेस्ट करना नहीं पड़ेगा. हम आप खुद भी ये जो कोविड आया रहा, कोविड का जो स्टार्टिंग हो रहा, हम लोग का फ्लू वैक्सीन अपने आप सब ले लिया रहा. हर साल में हम लोग ले लेते हैं. लेने की वजह से हम लोग का फायदा क्या होता है? फायदा होता है हम लोग का सर्दी खांसी ये सब होता नहीं. अगर सर्दी खांसी नहीं होता, हमको कफ होने का डर नहीं है, स्टिल हम लोग क्या किया, हम कोविड वैक्सीन ले लिया. उसके ऊपर भी इसका इन एडिशन टू दैट वी हैव टेकन द फ्लू वैक्सीन आल्सो. सो अगर ये वैक्सीन ले लो, हम लोग अपने को बचना है, हमको जैसे तैसे बचना है. हाउ टू, एक नंबर है आपको डाइट में ध्यान देना है. आपको हेल्दी डाइट खाना है, बाहर का वाला नहीं खाना है. एक्सरसाइज डेली, थोड़ा सा कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना ही है. दिन भर में आपको आलस होके मत बैठिए. एक रिटायर लाइफ कभी मत सोचिए आपका लाइफ रिटायर हो गया, आप छोड़ दिया, वो सब मत सोचिए. I have already retired from the government service around 7 years back. Still, I don't feel myself as my spirit was not retired. I request all my Rotarian friends, आपका spirit, what is there, you have to have the spirit for the long term.
There are instances in the world, those who have retired, when you ask, I mean, doing the physical exercise, then bodybuilding at a 115 years. When they have asked why you have done, how can you do? They say their spirit has not gone retired. एक आदमी का कोई स्पिरिट, आपका जुनून जो है ना, वो अगर छोड़ दिया तब तो आपका लाइफ कहीं भी नहीं रहेगा। आपको रोटेरी में बोलो, अपना खुद का बोलो, कहीं भी नहीं रहना। हम लोग को उस विचार में चलना है। फ्रेंड्स, कभी भी देखना है किसी अगर कोई दूसरे आदमी से वो विडम सीखते हैं, बट अपने को अंदर से झांक के देखना है, हम क्या है, हम क्या कर सकते हैं। आप अगर सोचते हम আমরা কি করতে পারবো, আমরা এখানে কি করতে পারি, ওইটা যদি আপনি একটু পজিটিভ একটা অ্যাটিটিউড নিয়ে নেন, you can be doing wonderful. Friends, all the presidents who have joined today, who has become installed today, I mean formally, though you have already installed yesterday and last part, because you have got the authority since 1st July. So आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम ध्यान देना है अपना मेंबरशिप। मेरा मतलब है मेंबरशिप जो आरआई प्रेसिडेंट बोलते हैं बढ़ाते जब, हाँ दैट इज देयर, बट जो मेंबर आपका घर में है उसको ध्यान नहीं देगा तो नहीं होगा। मीन्स हम बोल रहे, ये बोलने से आते कि पुराना मेंबर हो, नया मेंबर हो, नव प्रजन्मेर जत आसतेছে আমার মেম্বার আর পুরানো যতগুলো সবাইকে আমরা ইকুয়ালি আমি একটু চান্স দিতে দেব। এখন আমরা যদি ক্লাবটা একটু ভাইব্রেন্ট করতে চাই, যতগুলি নতুন মেম্বার আমাদের মধ্যে আসবো, নতুন সদস্যরা আসবো, আমাদের ওদেরকে পার্টিসিপেট করতে লাগবো প্রোগ্রাম দিয়ে। ওদের যেটা ভালো হয়, ওটা হবি যেটা, ওটা নিয়ে একটা করতে লাগবে। দ্যাট হ্যাজ টু বি there according to their likings and hobbies. If we can do that, then हम लोग का क्या retention में problem नहीं आएगा। हम लोग का personal relation should be very good. Can you know, last year IPDG, I mean Devas, I mean Subhash is so, I mean, successful district governor despite the pandemic situation, only because of his personal relationship with each and every Rotarian of the 3240. That's a wonderful thing. He has got that capacity to have the rapport with each and everyone. ये बड़ा हो, छोटा हो, उम्र हो, ऐसा कोई बात नहीं। ये जो एकदम पक्का सेंचुरियन district governor and most successful one only because of despite the COVID, ये होने का एक ही कारण है, एक ही है, उसका जुनून तो है और एक सबसे एक तो अच्छा रिलेशन बनाना रखते हैं। He has kept relation to it everybody, one and everyone. That is I mean, that's a potential of a leader exactly. I appeal all the leaders, আমাদের যারা আজকে ইনস্টল হয়েছেন, আপনারা একটু আপনার ক্লাবে ধ্যান দিন। ক্লাবের মধ্যে যেটা করবো আমরা, ওইটার উপরে খুব বেশি আমি গুরুত্ব দিই, তখন আমরা ক্লাবগুলি অটোমেটিক চলে যাবে। আমাদের ফাউন্ডেশনের জন্য আমি চিন্তা করতে লাগলাম না, আমার মেম্বারশিপ গ্রোথের জন্য চিন্তা করতে লাগবো না। কেন এখন নতুন একজন আসবো, ও আরো একজন নিয়ে আসবো। আমাদের খালি একটাই কর্তব্য, আমি যখন পাবলিকে কিছু কাজ করি, যখন আমি আমার ইমেজটা ভালো করে রাখি, that has to be, we have to be very careful on that. We shouldn't use anything un-Rotarian. Everything should be amicably, very, I mean, sweetly, in a comfortable, in a very congenial atmosphere, all the disputes. আরে আমাদের মধ্যে there are people are there with different man, আমাদের একজনের মন থাকবো অন্যদিকে, একদিকে থাকবো একজনে, আমাদের একটু ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন হইতে পারে। আমাদের तो हम लोग तो अलग अलग होता ही चाहिए, कभी हम लोग अलग भाषा से, लेकिन हम लोग को जोड़ के रखा है रोटरी। हम लोग को यही सोचना है, कहीं भी जाएगा, कहीं भी कुछ करेगा, पब्लिक का इमेज हम लोग का ऊपर, क्योंकि हमारे आवर इमेज मैटर्स। हमारे समाजे जो कि हमार इमेज तो আমি ভালো রাখতে পারি রোটেরিয়ানসে, আমার কাতর অনুরোধ, keep your image very high in the society. ওইটা যদি রাখতে পারি তাহলে আমরা সফল হয়ে যাব। আমি এক বছর যদি চিন্তা করছি না, আমি সেঞ্চুরিয়ান, লেট আস
think about the century of service by the all Rotarians. আমাদের ডিস্ট্রিক্টটা খুব ভালো হোক, আপনারা খুব ভালো করে কাজ করেন, এটা কামনা করি। এটা দিয়ে আমি বিদায় মাগছি। ধন্যবাদ। আমরা ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর বসে আছি, মহাশয়রা বক্তব্য শুনলাম। এবার আমাদের কাছে রোটারি 2014 ভাইস প্রেসিডেন্ট very good বক্তব্য রাখবেন। আর শোনার জন্য আমাদের ডিস্ট্রিক্টে মাননীয় গভর্নর রোহিয়া মহোদয়কে আবেদন
পরবর্তী যে প্রোগ্রামগুলো আছে ওটা কমপ্লিট হবে 8 ভালো করে
আমাদের এই প্রোগ্রাম বিভাগীয় এদিকে এদিকে একটু এদিকে এসে রায়গঞ্জের সেক্রেটারি প্রোগ্রামের উজ্জ্বল বিষয়কে অনুরোধ করছি মানে বলবার জন্য আর অ্যাসিস্ট্যান্ট গভর্নর ডক্টর বাসুদেব রবীন্দ্র দাস আসন করুন मालदा सेक्टर प्रेसिडेंट प्रोग्राम चंदन योगी सेक्रेटरी अभिजीत चौधरी विनोद मारवाड़ी তাদের গ্রহণ করছেন আজকে রায়গঞ্জের প্রেসিডেন্ট দেবুল শর্মা দীপকদা সবাইকে দেখতে চালানো করতে আমাদের
Can you hear me, Gary? Am I audible to you? Gary uncle? Yeah. Can you hear me from here? Hello, Gary. Can you hear me? Yes, we can hear you. Yeah, so sorry, my iPad cannot get through, but I use my iPhone. Okay, thank you very much. So let me have 5 minutes time for you for the introduction. Am I able to do that? Gary, can you hear me? Hello? Yes, you can be heard. Give me a speaker. Is the audio working? Am I audible? I can't hear you. Sorry. Is on. I think you need to unmute yourself. I have unmuted him from here. Yes, yes. Now he is unmuted. He should unmute himself. Yeah. I have unmuted. He is now unmuted. Let me have your voice, please. Sir, can you hear us? Yes, I'm okay. Okay. Can you hear me? Am I audible to you? Gary, can you hear me? Can you hear me? Yes, Gary. You guys can- Gary, we can hear you. We Oh, can you hear can you. hear, huh? Yes, we can. You are loud and sound. Okay, fine, thank you. Okay. So we have our RI president, voting foundations here, Gary Singh Wong, a dynamic voting president for the year 2014 and 15. Gary Wong is an advisor for OE Industrial Corporation and Bank of Kandy and a director of Federal Corporation and Kandy Development Company Limited. He previously was the president of Malay Overseas Insurance Company and the chair of Taiwan Solo Singcom Security Company Limited. He received the Civic Service Award of the Federation of Non-Profit Association and Outstanding Community Service Award from Taiwan's Ministry of Interior. He studied BBA from Eastern Michigan University and then he was honored by the same university as honorary doctorate of business degree. He was also honored by giving honorary doctorate degree of business administration by National Taiwan University of Technology. And he was also honored by IS University Jaipur, India, where he was given the honorary doctorate degree of teaching social science for government service. Gary joined his Rohini of Taiwan in the year 1976, and in the year 1988, he became the president of Rohini of Taiwan. In 1986, he became the district governor of the district 345 of Rohini, Thailand. Gary was the director, district governor in the year 1986 as a state. He was the director of Rohini in the year 2000. He was the vice president of Rohini in the year 2001. And he was the trustee of Rohini Foundation in the year 2006. And fortunately, I am quite fortunate that I have my privilege to work with him as the district governor of Hindu 40. When Gary became the RI president in the year 2014 and 15,
and secretary, trustee, he was a trustee of Rotary Foundation, and finally he was the chairman of Rotary Foundation in the year 2019. He is a recipient of Service Award, the highest honor of Rotary International given by any individual Rotarians. He has received the award of Lady of Service. He has also received the award of Distinguished Service Award from Rotary Foundation. Like the Rotary, you remember friend who worked in the year 2014-15. You remember that like the Rotary was a theme and he served as Vice President. And he used to address the district governor worldwide as best class governor. He reviewed the concept of Rotary Day, which we are following till today. The Rotary Day concept was his brainchild. And Gary was very much determined to have more women Rotarians in Rotary. And he had motivated our district, many districts, all the districts in the world, and all the clubs to have more women members in their club. I was fortunate that I had served as district governor in the tenure of Gary C.K. Wang, who was the RI president in the year 2014 and 2015. Gary, your line starts now. Welcome to the program. So, fellow Rotarians in the family of Rotary, 你好. Ni hao, yes. Ni hao is the Chinese language to address people. Yeah. Ni hao. It is great an honor to be here with you today, and thank you for your invitation to participate on this very important 10 Club installation ceremony. I can feel that on the screen, there's so much energy in this song. I think that is because each of you are completely 100% committed to the ideas of Rotary. For you, service about self isn't just an idea. It is the way you have decided to live your life. And that gives so much impetus to everything you do. And it makes our meeting, even our quiet dinner, invigorating and fun. Long ago, before Rotary began, there was a man who embodied in himself and the principle of Rotary. His name was Confucius, and he lived in ancient China. And one Confucius proverb, which has guided me and motivated me for many years, goes like this: 与其抱怨，不如改变. It is better to light a single candle than to sit and curse the darkness. To me, this saying carries 3 layers of meaning. First, Confucius advised us to be selfless like a candle, which burns itself to bring light and joy to others. As a Rotarian, we devote our time and energy to our community and improve the life of others. Second, we need to face life's challenges with courage. Instead of cursing and complaining about world's problems, we take action and make small changes one at a time. Third, the light of a single candle may be feeble, but if all of our colleagues and friends all join, our community will be much brighter. If I light one, you light one, and more than 120 million Rotarians all light one, we can light up the world. Another word the Confucius spoke are worth remembering today. 见义不为无勇者.
In English, we might say, if you see what is right and fail to act on it, you lack courage. Looking out on this screen, I see people who embody this idea. As Rotarians, we see the problems in the world. Then we take courageous steps to solve them. We are people of action, people who create lasting change, equipped by the resource of foundation. We are able to make a difference in thousands of communities throughout the world. That is the wonderful thing about Rotary. It is easy to find people with good ideas, but to find people with good ideas and to encourage, put them into practice, then you want to look at the Rotary. This year, President Shekhar theme is serve to change life. He asks you to do more, to grow more. And he say, he is a shaker and you are the mover. And I understand that District 3240, you have 12 zones and the 9 revenue states of India. And this zone is in the state of West Bengal. Your zone is having second largest number of clubs in your district. And few of the Rotary clubs are having large projects under global grant of TRF. And one project, the Mother's Milk Bank, is one of the prominent projects in your zone. So this area of your country is the highest producer of quality mangoes, besides huge products of rice. So I want to congratulate to all of you for your service to Rotary, for your achievement in the past. So today you will become the governor or club president. This is your time to do something, to lead your club in your district, to become a very active Rotarian and strong leader. You are the people of action and you have the courage to act. And your actions are transforming the world. Because of your work, many people, including yourself, will change life. Thank you, good luck, and God bless all of you. 谢谢, Namaste. Namaskar. Namaskar. Thank you very much. It was wonderful listening to you. I have been listening to you since last 2013 and 14 and your speech is so motivational, so inspirational, so encouraging to the Rotarian. And I wish you all the best for your family. Please give my regard to Meena and Heavy also. Take care. Thank you very much for coming here and to go to India. Thank you once again. এবার আমাদের কাছে আবার ভার্চুয়ালে বক্তব্য রাখবেন উনাকে আজকে অবস্থান রোটারিয়ান সুভাষিতা আমরা রাজা বলে জানি
Well, thank you. Thank you, Kajolda, for giving me this opportunity to speak. I would prefer to speak in English because Gary is there. So if I speak in Bengali, it will be difficult for Gary to understand. As Gary would speak in Chinese, we would have been having no way to understand. Anyway, good evening and rather a good night, for a little late night in Taiwan, I can understand. My respected past RI President Gary C.K. Huang, the light of governor, light of president of 1415, the light of governor, past governor Sapan Chaudhary, and past governor Samirda, who are present physically in the meeting hall. My dearest club members of Zone 4, all 10 clubs, presidents, secretaries, the assistant governor, Bivash Bishash, all the past assistant governors whosoever present here, and of course, my successor, Governor Dr. Mohan. It's a amazing task for me to address this group of people because I always believe that Rotary rotates with a more energy, with a more profound power, and that's the beauty of Rotary. If anything beautiful in this world, I must say the transformations of leadership in Rotary is the only one thing. Reason being, if you ask any corporates or any company that on a particular given day your entire leadership will get changed, if you go and ask any top officers of that corporates, the corporate officer will perhaps tell you, man, perhaps yesterday night you had a little high and your hangover is still on. How come in one given day the total corporate managers gets changed and the company will survive? It is impossible. But in Rotary, see the magic of Rotary. Every year on 1st July, starting from the RI president to the sergeant at arms of each and every Rotary club gets changed overnight on 30th June, 1st July. But Rotary survives for 116 years. Every year Rotary is making more records. Every year Rotary is making more success, coming more good work, good ideas. The reason is simply one. Because in Rotary, we all are leader. Each and every Rotarians are leader, and that is the reason they can lead their club, district, or the Rotary International every year with a new leadership. I know the potential of this zone, the 10 clubs that we have. Potential, we know. Sometimes, probably, we not understand our potential and work accordingly. In Rotary, there is no small, no big, no large. Every Rotary club itself a unique club. Every Rotary club has the immense power to do magic in the society. So my sincere urge to all Rotarians of Zone 4, do not look at others. Look at yourself. Look at yourself, understand what potential you have, and act accordingly. The first emphasis you should give to your club is, of course, membership. Because why we are in Rotary? We are in Rotary to serve people. If we are in Rotary for not serving people, I'm sure our staying in Rotary Club has no meaning. Because we do not go to Rotary clubs just for a dinner or a glass of drink or saying hi, hello to our friends. We can do that at our home also, calling my friend and his family and having the dinner and chit chat and a glass of drink, everything we can do. But we go to Rotary clubs to do some things because this is one of the components in Rotary clubs to keep us close and together so that we can work for people. Whether Rotary clubs in Gazole or Rotary club in any other place in the world, maybe the Rotarians says different languages, the cultures are different, the food habits are different, but all the Rotarians globally have one common thing, and that is
service for people, because Rotarians are the people of action. And to do that service, we need more good hands to do good work in this world. And to need good hands, we need more membership. Our RI President Shekhar Mehta has given a call that each one bring one, and he has set up a goal to move the world Rotarians count from 1.2 to 1.3 million. And if we need to reach our goal, to make our RI President successful to reaching his goal, then each one of you need to work hard. Bring Rotarians in club. And friends, when we bring a Rotarian in the club, remember, we are bringing a friend for our rest of the Rotarians of the club for a lifelong friend. We are not bringing any Rotarian for any specific year. You come this year and go that year. We are bringing a Rotarians for a lifelong friendship. The immediate past Rotary International president says, we are making Rotarians to our club for a lifelong friendship. So whenever you are bringing a new member, remember you are gifting a Rotarian to your club. And friends, when we gift something to our dear and near ones, we always be careful that the gift should be in order, in a perfect shape, and it should not have any defects. When you go to a shopping mall and buy some gift for our dear and near ones, 4 times we ask the shopkeeper, please check. The product should not have any scratches, any defects, because I'm going to present this item to one of my dear ones as a gift. And we do not want to gift any defective product to any of our near and dear ones. So when we are gifting a Rotarian to our Rotary clubs, ensure your friend has no scratch, no defects, and can sit in any Rotary club as perfect as you are. And the second thing after bringing the Rotarians, it is on the club leadership to engage the Rotarian. Often we have to say, a new Rotarian cannot do anything. Let him be little old in the club. Let him understand Rotary first, then he can take charge of doing any projects in the club. Friends, perhaps we are misjudging by saying this. Because as I said, in Rotary, everybody is leader. Everybody has a leadership quality. Maybe he is little less about Rotary information. That responsibility is ours. That responsibility is the club members to enhance his Rotary knowledge and make him at par with the club's other Rotarians. Engage new members, involve new members in the projects so that he can also feel that he is also important in the club. Every year in the month of August, when a membership month comes, we added member. But unfortunately, the last week of December and the last week of June is the season for attrition of the new members, Rotarians from the clubs. Reason? Probably that we are not able to engage Rotarians, and that's why a chunk of Rotarians who have joined Rotary recently, maybe last 1 to 3 years, are leaving Rotary maximum. So the new leadership of all 10 clubs, I am sure you have made your plan. Yesterday you have done a fabulous job under the leadership of Governor Mohan, adding around 200 Rotarians in our club. That's our first achievement you have done, but big job is to hold back these 200 Rotarians in every clubs that we have added this year. Retention is something equally important with the development of membership. So my sincere request and urge to the club leadership, kindly engage your member and give a thought or a close look to retain your members. If you retain your members, the other things will fall into the place. Foundations, service projects, all will fall into place. Because to do anything, the first thing you need more hands. So let us not lose the more hands, and the other things will fall in place. I would not say much because I know a lot of speakers are there in line today to address you. Once again, I congratulate the outgoing president and his team for doing a fabulous job in 2021 when you had
opened the opportunities in many ways. As Holger Nick had said, Rotary opens opportunities. And I know the fabulous job that you have done each and every club. I must congratulate all the outgoing presidents and his team for making Rotary a celebration in 2021 in spite of the pandemic. I appreciate your benevolent and generous support to Rotary Foundation for making more good in this world. And now it's time for the team 21-22. I wish all the 21-22 presidents and his team a great year ahead. And I'm sure with your thought, with your activeness, with your involvement, you would have find out a way that will serve to change the lives of the people of your community. Because Rotarians are people of actions, and Rotary responds when the requirement comes. Once again, thank you so much for inviting me, Assistant Governor Bibhash, and the team for this meeting. I am pleased, I am elated, and I am honored to have the same way delivering to you. And I'm sure the next 363 days would be a eventful day for the Zone 4 and making District 3240 more proud. Take care, have a good time, stay safe, namaskar. Thank you very much, Mr. Governor. So we are completing our digital part here. Now we will be moving towards our physical ceremonies that are waiting. So have a good night. Direct location দিয়ে দাও। এটা সফট স্কিল দিয়ে দাও। আপনি বর্তমান প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি সেক্রেটারি